So coming to the admissions part, like you also have the GDs and the PIs and the ward written test, etc., etc. Any changes you foresee in that? कि you it's going to be GD group discussion वगैरह personal interview plus one वो तो I रहेगा. think that exactly nitty-gritty I can't Yeah. tell you about it, but it is always going on in the same manner. So GD is there, personal interview is there, correct? सर एक कॉलेज है यहाँ से बाहर जाएंगे तो 8 किलोमीटर दूर SPJ बॉम्बे. हाँ. आपने सुना होगा तो वो मेरा स्कूल है. सुना. सो हाँ SPJ बॉम्बे से प्रोफाइल बेस्ड स्कूल है शुरू से. मतलब अगर MS श्रीकांत करके एक हमारे फाउंडर हुआ करते थे. Now MD Gurgaon has also become profile based. Rajesh Chakravarti was the ex director साहब of it and he brought in that change. उसमें क्या है कि सर 90 परसेंटाइल इन कैट पे भी बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू हो गया जो कि या जेंडर हैं, यू नो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, या बैकग्राउंड अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस पहले अमेजोन में काम करके आए हैं, या नेशनल लेवल स्कूल लेवल पे कुछ ऐसा. सर हम भी प्रोफाइल पे जा सकते हैं जब कट ऑफ थोड़ी गिरे अभी तो सर एडमिशन लेने बड़ा मुश्किल है. ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस विचार करेंगे इस पर. विचार सोचा जस्ट बिकॉज जिस आप बता रहे हो कई दिन हमारे यहाँ डिमांड चल रहा है, बात कह रहे हैं लोग. लेकिन अभी तो हमारा जो पैटर्न था कि सो दैट की जो मेरिट है जैसे गेट की जो है उस पर जाते थे. ज़्यादा देखेंगे कैसे तरह के लोग बात करिए सर. मेरा रिक्वेस्ट और स्टूडेंट्स का भी बट रिक्वेस्ट. एग्जीक्यूटिव MBA तो हमारा रहेगा दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट That's आल्सो. अच्छा. उसमें दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि कैसे होगा उसमें प्रोफाइल ही चलेगा, लोगों को रहेंगे बट आल्सो. ठीक है सर. Lot of you guys have been asking this questions कि ये निटी IIM बॉम्बे बनने वाला है तो who else I can get caught off and the director साहब themselves. Sir, welcome on board. थैंक यू. Sir is my super senior from NIT. Sir नागपुर में पढ़ रहे थे, मैं सूरत में पढ़ रहा था. And after that he's done master in production from MNIT. Sir, आप 2 NIT से पढ़े हो. And you did a PhD at Jadavpur University. Yes. And then sir has spent nearly 16 years at IIT Kharagpur as a professor, sir. Yeah. Operations. Industrial and systems engineering. Wow, industrial system engineer. And now sir is heading the holding this flag strong at NITI Bombay. Sir, first of all, super congrats for NITI becoming an IIM Bombay. This is so amazing. Sir, ये पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा. तो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ. आपने सुना है मेरे घर के पीछे निटी है. हाँ बताया आपने तो आज मेरे को मौका मिल गया कि आपको आके इंटरव्यू करने का. तो सर पहले तो बताइए हाउ डिड दिस हैपन, हाउ इज द जर्नी एंड विल टॉक अबाउट द चेंजेस आल्सो. क्या क्या होने वाली है. देखो मैं यू नो आई एम बेसिकली वर्किंग इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन सिंस लास्ट मोर देन 25 years. So certainly NITI was a well-known name in that field. जी. So I became director here perhaps in 2019 November. So when I came here, then I found that say for example we have mainly broadly programs like PGDI, PGDIM, Yeah. and there were other 2 programs also like in the area. SM. It was in the area of project management, manufacturing management, and SM. Yeah. So then there was some letter came from the ICT. Then we again bring back to the PGDI. Through its admission was through GATE and Yeah. the PGDIM through CAT. Right. And then sustainability we started with the both mix, correct? Like this. Right. Then we found that among the students always there is say discussion among them that whether we are like MBA or we are MBA or we are master like this, because there was some like not very clarity was there particularly whether PGDI or PGDIM there, but internal or industry opinion was that both these programs are close to the MBA, correct? Because nowhere you can find that for people PG diploma, if it is their name is IE, but such a good environment, such a good salary was there. Yeah. So boys were facing a lot of problem of recognition. What is this program? Whether we can write MBA or not. Right. And in this changing world, it was frustrating for anybody if you get a letter from Germany or US or UK to please certify that whether this program is like MBA or Correct. like a master degree or not. And such a brilliant boys are coming here with very high GATE and CAT score. Right. And if they have to bother about what certificate they are going to get, it is like MBA or MBA. Yeah. Is it truly an MBA? Frankly, I tell you, I cannot describe this kind of embarrassment. And many of, particularly, there was one girl from my district, Jaunpur actually.
she came and she was weeping. Sir, I was topper of my institute, and what degree I should write. So मुझे लगा क्या कि we should do something. Wow. And then we trace the history that how the institute had tried earlier also for such kind of recognition. Because in Government of India, if you go and see, so we were put in the others category. Achha. There are the list of the institutes of national importance. Yes, So yes. you mean salary purpose, every purpose it is there Yeah. as a premier institution. Yeah. But listing if you go, so listing of institution of most importance, Usme nahi na. tag will come when you have an act actually, correct? Oh. So we don't have act. Right. So we thought that how to bring and which act is closer to us. Right. So certainly nobody comes here for getting less than MBA. It is aspirations of Yeah, everybody. yeah, of course, of course. Whether you call any MBA, but everybody was coming for this purpose only. True. And in the degree it was not Wilson. So I thought that if we try and convince the policy makers that can we get an IM tag, because Bombay is a big city, Right. mother of all the finance, all the logistics activity, so many stalwarts are staying here. More than 1.52 crore population is here. Right. All the business, in and around moves In to Bombay. Bombay. बिल्कुल. So nothing great can be there if this institute will be declared as a IM. Sir, you never thought ego नहीं आया सर? हम भी 1963 established college हैं नीति और इतने आपने हमारे- सही कहा, ईगो हमें था, पहले था. I was also feeling pride when I was a student that we could not get admission in NITI because our gate score was not that high. Yeah. So that ego was already there, but in changing scenario, Yeah. that ego was there when only 3 IMs were there. Correct? Yeah. ABC. ABC. But when many others have come up, and also industry were asking questions, are you MBA or not? Right. Well, PGDI, even IM also, na? They have changed their PGDM too into the MBAs, correct? Right. So, and we were only giving this kind of, in government sector, Right. like this. Right. Right. So idea was that when everybody has changed their degree to the MBA like that only. There were no board पीछे सर जो पुराने बोर्ड हुए एलुमनाई हुए उन्होंने बोला था कि हमें नहीं चाहिए और everybody is happy. Students तो बहुत खुश हैं. There are some, everybody, you respect their sentiment also. Yeah. They have gone through that. So there were some kind of people are saying. Yeah. But I thought that they are very learned persons. Sooner or later they will understand that what are the existing environment in the country, industrial environment is there. So we have to bother about the future of the students. Correct? बिल्कुल सर. Say, and when they were there, at that time when NITI tag itself was good enough to sell into the market. बिल्कुल. But nowadays, the moment you have 20 IIMs, we have all the bigger IITs have the MBA degree providing Yeah. places. ये आपके touching wall आए थे Touching Bombay. wall, correct. So हमें लगा क्या कि हम छूट जाएंगे, correct, इस रेस में. So Wow. it is better that if we can clearly give MBA degrees to our students because they are not coming here for another degree. Great. तो Mind पहला it. तो चेंज हो रहा है सर MBA डिग्री मिलेगी उनको. पहला clear है. बहुत बढ़िया क्लियर. Great sir. And और क्या क्या changes होंगी sir? Students are very happy. They're all celebrating with you. I saw some photos and pictures like we are going to get IIM Bombay. आपके जो पुराने seniors हैं, मेरे roommate जितेन विटलानी was in NITI alumni. He was very happy. Finally our IIM tag मिल गया है. And because we all aspire for it. What are the changes sir in the curriculum etc. is going to be happening? Actually, let me honestly tell you. When we were preparing our, details, project proposal and जी. plans, you see the Wharton, you see the top other. Yeah, Stanford, Harvard, yeah. They have, there is a flavor of somewhere it's a flavor of say more humanity content, somewhere more tech component, somewhere more analytical component, correct? Right. So it was in my mind also that NITI should be, move towards a more technology-driven management institutions, correct? And also absorb other people also, Okay. particularly those who are having, very good flavors for the societal concerns and also coming from the humanities background also. But one program. Okay. One program exclusively we should promote, which is basically mapping with the current scenario of environment the of tech tech. management. Like say you Bilkul. have a different kind of technologies being Bilkul, coming sir, up bilkul. for decision making. Yes. Large scale data is coming up.
large language modeling is coming up. By the way, Chat just- GPT is coming Chat up. GPT. By the way, sir was working on deep learning from 2002-3. Data mining was that time Data 2002. mining. My paper is there in SME Journal in 2002. When 2002. hardly anybody was talking about all this. Wow. So data mining जो आजकल बोल रहे हैं हमें data scientist बनना है तो sir has worked around 20 years back, sir. 20 years plus. Wow, fantabulous. Great sir. Coming back to our topic. तो एक हो गया curriculum changes आप करेंगे और tech में आपका focus रहने वाला है. नहीं, दो है हमारे एक्चुअली क्या है वी आर प्लानिंग ऑल टुगेदर 3 programs which is there at present also but it's molded in the Current form, scenario, yeah, current yeah. scenario. So one will be MBA Operations and Supply Chain. Right. Other will be MBA General, correct? Like which is offered by all other. But there also will give windows. We will give baskets. Yeah. Boys can choose that they can go for say marketing analytics. They can go for the Like a specialization kind of thing. specialization. Brilliant, They can yeah. take. Fintech they can go. They can all other things will be there. Correct. This we have planned already. Excellent. And already the syllabus which was last year were designed with almost consultation from almost all the top alumni as well as the MIT professor plus some of them are Indian industry people everywhere. Wow. We consulted them. But still we are going to further tweak it Yeah. to make it fully compatible with the credit and other requirements of the business. Yeah, that will be required. That will do. So, एक operation, one will be MBA general, and then you can have other thing. One MBA MBA tech, Operations and Supply Chain Management. MBA operations. Will Another MBA General and MBA Sustainability. Because sustainability is the, you know, this is the reality of the world because we want to be sustainable. सर उसमें सीट्स थोड़ी कम है सर. Can वो we increase- ऐसा है कि we like making slightly less seats because the moment more and more demand comes up, no, we'll increase it. Correct. Right. So that they will not have any placement problem, they will not have any Yeah. absorption problem. Right. So initially we'll go with the 30-40 seats, correct? Later on, but all this thing, we have written out proposal. Okay. And all we will go just after this final letter which has come up, will come up, we'll go to the board, get their total permission on that, and then number of seats in each area, You can decide. their admission mode, etc. will be there. But broadly, I want to say, all this business ones, we will go by the CAT mode, correct? And we are also going to offer one program trying to build the Bombay IT also exclusively for MBA Industrial Engineering and Management, correct? जी. There we will retain the GATE score, correct? गेट सर लेंगे सर ये क्वेश्चन. Only for only we are planning to see. Let me tell you, we are planning for one program, Great. which is of 30-40 seats, correct? Okay. That we will taking, and also we are trying to see that there is collaboration with the IIT Bombay also. Okay. So we'll jointly run a program on that with around 30-40 seats, correct? Through Because industrial engineering per se is also very close to the operations and details of the thing. True. So that those who are from GATE, they should also have say, but that program, we will also run it, correct? Right. We will run with it. But mainly these 3 programs, their total admission will be around 450 seats or 500 seats through this CAT model. ओके सर यहाँ पे आई वाले बच्चे बोलते हैं कि हम ही यहाँ पे फ्लैगशिप हैं और आई एम वाले बोलते हैं हम देखिए flagship सब हैं. ये सब सुना होगा आपने सर. आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दिस कंट्रोवर्सी मेरे लिए सब नीति के स्टूडेंट है नीति के ही रहेंगे. बिल्कुल तो हमें क्या है ना कि देखिए जिस तरह का चेंजेस होते हैं सोसाइटी में बिल्कुल उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए. मेरा बस चले देखिए जैसे हमारा IIM कलकत्ता में प्रोग्राम चलता है जानते होंगे और बिजनेस एनालिटिक्स का जी, जी, गेट जी, कैट GRE GMAT सब चलता लेते है. हैं. तो हम भी ऐसे एक प्रोग्राम चलाएंगे अच्छे से इसमें गेट भी रहेगा कैट भी रहेगा GRE भी रहेगा सब रहेगा. सो आइडिया इज देयर कम से कम 100 लड़कों को हम लोग ने व्यवस्था करेंगे उसको बिल्कुल. कैसे एडजस्ट करते हैं दैट वी हैव टू सी. बट ये 3 तो पक्का है करेक्ट. बट ओनली थिंग दैट ऑल दिस व्हाट आई एम सेइंग proposal is there, we have to go to the board and get their stand. Brilliant, sir. Correct. So ये है मतलब मैं आपसे खुल के इसलिए बताना चाहता हूँ जी. कि इसमें भी देयर इज ए स्कोप टू डिस्कस. करेक्ट. Of course. मतलब बोर्ड कहता है कि आप जो है कुछ इसमें जो MBA ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें कुछ उनको भी रख लीजिए. बिल्कुल. तो we have to do तो इसमें भी चेंजेस आ सकती हैं. दैट्स व्हाट सर इज ट्राइंग टू डिस्क्लेमर दे देते हैं जो भी हम बोल रहे हैं चेंज हो सकता है. नहीं ये हो सकता है प्लस साथ साथ जो है लेकिन प्रोग्राम तो तीनों रहेंगे. प्रोग्राम तो 3 है. मेजॉरिटी ऑफ एडमिशन थ्रू कैट से ही होगा लेकिन ये भी है कि हमारे हम प्रोग्राम रख रहे हैं गेट के लिए भी रख रहे हैं. अच्छा वो भी करेंगे. बहुत इट्स अ वेरी गुड अपडेट. Yes, yes, yes. सर आगे चलते हैं सर. लास्ट पार्ट अभी मतलब जैसे मेरा कहना है कि हमें गेट से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या है आप भी जान रहे हो बताने मतलब लेट अस बी फ्रैंक कि जो से इंडस्ट्री का जो माहौल है दे से व्हेन दे से MBA नॉर्मली आप भी जानते हो कि MBA मतलब थ्रू कैट होता थ्रू है. क्या करते हैं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं जो एनालिटिकली साउंड MBA होगा
उसमें हम गेट को आराम से Adjust कर लेंगे। आई थिंक दैट विल बी आवर स्ट्रेटजी बहुत एंड दैट इज देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आल्सो इन मेनी It's going on. Great, great. Sir, let's talk about the admissions part. अभी काफी colleges profile based हो गए हैं, जैसे MD गुड़गांव. just again what हाँ जी. I say to your viewers na, हाँ. see I have deep respect for everybody, correct? It's whether they are from GATE or they are from CAT or they are from any other discipline, but say we have to go by the what mostly the market demand suggests. जी. So we will also adjust some of the students from the GATE also in the program that I told you 2-year program जी, on IGSM. We have listed same thing also for our board, correct? बिल्कुल सर, बिल्कुल. But according to the placement, according to other requirements also, na, we will change this number. बिल्कुल बिल्कुल सर. So coming to the admissions part, like you also have the GDs and the PIs and the ward written test, etc., etc. Any changes you foresee in that? कि you it's going to be GD group discussion वगैरह, personal interview, plus one वो तो I है. think that exactly nitty-gritty I can't Yeah. tell you or present, but it is always going on in same manner. So GD is there, personal interview is there, correct? सर एक कॉलेज है, यहाँ से बाहर जाएंगे तो 8 किलोमीटर दूर SPJ बॉम्बे. हाँ. आपने सुना होगा, तो वो मेरा स्कूल है. सुना. सो हाँ, SPJ बॉम्बे से प्रोफाइल बेस्ड स्कूल है शुरू से. मतलब अगर MS श्रीकांत करके एक हमारे फाउंडर हुआ करते थे. नाउ MD गुड़गांव has also become profile based. राजेश चक्रवर्ती was the ex director साहब of and he brought in that change. उसमें क्या है कि सर 90% इन कैट पे भी बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू हो गया, जो कि या जेंडर हैं, यू नो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, या बैकग्राउंड अच्छी है, वर्क एक्सपीरियंस पहले अमेजोन में काम करके आए हैं, या नेशनल लेवल स्कूल लेवल पे कुछ ऐसा. सर हम भी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जब कट ऑफ थोड़ी गिरे, अभी तो सर एडमिशन लेने बड़ा मुश्किल है. ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस विचार करेंगे इस पर. विचार सोचा जस्ट बिकॉज जिस आप बता रहे हो, कई दिन हमारे यहाँ डिमांड चल रहा है, बात कह रहे हैं लोग. लेकिन अभी तो हमारा जो पैटर्न था कि सो दैट की जो मेरिट है, जैसे गेट की जो है उस पर जाते थे. ज़्यादा देखेंगे कैसे तरह के लोग बात करिए सर, मेरा रिक्वेस्ट और स्टूडेंट्स का भी बट रिक्वेस्ट. एग्जीक्यूटिव MBA तो हमारा रहेगा दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट That's आल्सो. the- अच्छा. उसमें दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि कैसे होगा, उसमें प्रोफाइल ही चलेगा, लोगों को रहेंगे बट आल्सो. The last few minutes, parting thoughts about IIM Bombay. Everyone excited. तो ये कब होगा और क्या होगा और कब इसमें होगा? देखिए बताओ आपको, गवर्नमेंट का गजट आ गया. वो अंशिका आपकी स्टूडेंट से हाँ, नहीं, गजट आ गया. डिग्री पे मिलेगा कि नहीं सर, ये बताइए पहले. हाँ, अच्छा है. उनको जो बच्चे भी हैं उनको भी डिग्री मिलेगी, जो पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो आने वाले हैं उनको भी मिलेगी, और जिनका कन्वोकेशन नहीं हुआ उसके लिए हम थोड़ा लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, करेक्ट. अच्छा. अदरवाइज उनके ब्रैकेट में ताइए अपने आप लिख उठेगा. अच्छा, है कि bracket में, नहीं? नीति बॉम्बे दो बैच के लिए कन्वोकेशन नहीं हुआ है. जी. अब चूंकि IIM हो गया है ना, मतलब नो सेकंड थॉट ऑन दैट. सो जिनको डिग्री नहीं मिली अब तक, जी. तो उनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं. लेकिन वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि विथ स्मॉल क्रेडिट एडजस्टमेंट एक्सेट्रा ना, कैन वी गिव देम द IIM tag. That is why legal advice or some seniors na who have done that one, we are also considering them. कि लिखे क्या होता है, बट आई कांट एग्जैक्टली टेल एट दिस टाइम. बहुत बढ़िया. आज सर निटी जब IIM बॉम्बे बन रहा है, मुझे अपने सर जवानी के दिन याद आ गए, जब हमारा NIT सूरतकल REC हुआ करता था, तो वो NIT बना. फर्स्ट ईयर में हमने कर्नाटका यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, सेकंड ईयर में REC बोला गया, और थर्ड ईयर में IIT दिल्ली के डायरेक्टर साहब आए एंड वी वर अनाउंस NIT सूरत इज गोइंग टू बी IIT दिल्ली. तो हम सब खुश हो गए, ये हो गया वो है, पर अभी तक IIT बना नहीं. तो मैं जब पहली बार सुना तो पीपल स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर वीडियो करूंगा, और मुझे कुछ नहीं पता है, बट आपने बता दिया अभी. सो नीति में गजट आ गया. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि नीति जो है मुंबई हो गया है. अब उसमें कुछ मतलब छिपा नहीं है. This is so amazing. Calcutta 61 and Ahmedabad 63. Niti was again 63. तो सर ये अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा को कम्पीट करेगा कि न्यू एम्स के साथ? सर हम कोलेबोरेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. कोई कंपटीशन हमारा नहीं किसी. क्या बात कर रहे हैं सर? वी डोंट बिलीव इन कंपटीशन बिकॉज वी बिलीव इन कोलेबोरेशन. अगर उनके साथ हमको कुछ प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, बड़ी खुशी होगी सर. वी आर वेरी हैप्पी टू रन प्रोग्राम. सर बच्चे तो नहीं करते ना, बच्चे तो अहमदाबाद. देखो सर, बच्चे भी समझ जाएंगे सर. बच्चों के गार्जियन हम ही लोग हैं ना सर, उनको समझाना हमारा काम है सर. तो आपको क्या लगता है सर, ABC अभी ऐसे ब्लैक ही बोलते हैं सर? ब्लैक क्या आपका कंसेप्ट मेरे लिए क्या है कि सब संस्थान अच्छे हैं. They are all very good. सर इज वेरी गुड फ्रेंड विद ऑल द डायरेक्टर्स. तो सब बात नहीं सर, डायरेक्टर की फ्रेंडशिप बात नहीं सर. तो सब आएंगे, बच्चे भी फ्रेंड हमारे, वो से स्टूडेंट वहाँ से पास आउट है. जैसे आप SP जैन से हो, मेरा भी स्टूडेंट SP जैन से है. मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त वहाँ पे हैं, मतलब जो निकल के गए वहाँ से. बिल्कुल जी. सो मैं उसी को नहीं, मेरा विश्वास है. देखिए, इंस्टीट्यूशंस आर मेड फॉर कोलैबोरेशंस, नॉट फॉर कंपटीशंस. बिल्कुल बिल्कुल.
जहाँ शिक्षा मिलती हो, जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई करते सर, हैं, वहाँ इस बात पे घमंड नहीं होना चाहिए कि हम एक है दो है। ठीक है, बच्चों की चॉइस डिपेंड करती है इनको कहाँ ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, फैसिलिटीज़ कहाँ है, बिल्कुल। जॉब ओरिएंटेशन ज़्यादा कहाँ अच्छा बिल्कुल। है कि नहीं, वो तो उनका चॉइस है, बच्चों को जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। पर फिर भी सर मैं तीसरी बार ट्राई करता हूँ, सर आंसर दे नहीं रहे हैं। नहीं बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वेयर डू यू सी सर, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा भी एबीसी बोलते हैं, ठीक है। आई फील तीनों का एवरेज पैकेज सेम चल रहा है, तीनों का हाँ। अलग अलग चार्म है। अहमदाबाद बच्चे थोड़ा हमारा strict कहाँ होते है? हैं। आप हम लोग बताइए। कहाँ है उसमें? आप आप बताइए। बताओ ना, तब सबसे बात करते हो ना। तो इनसे पूछते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स ड्रॉप इन द कमेंट एबीसी। जो सर एबीसी निट्टी के ऊपर अभी रैंकिंग में वगैरह मानते हैं लोग? है, मैं मान लेते हैं। अभी है ना, अभी है, अभी है, अभी है। ठीक है, अभी है, अभी तो मानते हैं, अभी अभी कोशिश करेंगे सर ना। हम भी कोशिश कोशिश करेंगे, करेंगे। अच्छा आई एम बॉम्बे कहाँ जाएगा उसके बाद? ए बी सी के बाद लखनऊ खड़ा है कि इंदौर खड़ा है कि कोई नहीं, और इंदौर खड़ा है? भी नीचे सर, इंदौर नीचे, रैंक नीचे है। रैंक आपका 7 रैंक है सर। हाँ, मजाक वही तो थोड़ी है। रैंक है। So amazing. तो यू ड्रॉप इन अ कमेंट वेयर डज द निटी स्टैंड इन द एंटायर ब्लैकी कैटेगरी। और हम लोगों ने डिस्कशन की थी, सर बोले मुझे समझ नहीं आता वो ब्लैकी क्या होता है, बट नेवरदलेस सर इज सच अ हम्बल गाय। सर थैंक यू सो मच फॉर calling me to Nitty and doing this podcast with us. It was lovely having you on board. Boys and girls, do it on the like button and drop in your comments. I'll see you in the section again, and I'm going to do multiple videos with sir as well. Thanks again, sir. Thanks for joining me. Take care. Bye bye. Thank you sir, thank you very much.